Assalamu alaikum, my lovely students. How are you? I'm your teacher, Miss Sana. You know, Miss Sana is too happy, is so excited because टीचर ने आप सबके वर्क पैक्स चेक किए हैं. और आपको पता है, जब टीचर आपके वर्क पैक चेक कर रही थी तो टीचर बहुत हैप्पी हो रही थी कि मेरे सब स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है. लुक दिस, टीचर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है भाई. वेरी गुड स्टूडेंट्स, गुड जॉब. टीचर इज क्लैपिंग फॉर यू. एंड भाई आप सब भी अपने लिए क्लैपिंग करें. वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट. You are my star students. You are my shining stars. So, today is your Abacus English subject. You will going to learn Abacus English. Let's start. The very first sound is A, B, K, D, the drum, F, G, H, a laughing sound, ha ha ha, H. Show me your teeth, E, and then J. Again, A, B, K. सब टीचर के साथ साथ पढ़ेंगे. ड, ए, ग, ह, ई, ज. ठीक है, ये सारी साउंड्स you have learned from your teacher. Okay, the next sound after j is, the next sound is no, not like this. First of all, close your eyes, students. Then teacher will tell you the name of your new friend. You're excited to meet now? Then close your eyes, everyone. Hurry up. Yes. Now open your eyes. Yeah. K. Nice, na? K. Yeah. And now this is your Abacus English reader. Take out your Abacus English reader. या टीचर जो पढ़ा रही हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आपको लर्न हो जाए. This is your Abacus reader page. K. The sound is K. Yes. K for kangaroo. This is your new friend, and these all are the vocabulary and friends of your sound, new sound. Yes. K for kangaroo. Yes. K for kangaroo. This is kangaroo. K for key. K for king. And K for ketchup. Yes, these all are the vocabulary of the sound K. K. Okay, now teacher will going to explain these all vocabularies, friends, one by one. So listen your teacher carefully, students, ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए ना. vocabulary क्या कहती है? What is this? Kangaroo. Look at this. A big animal. Yes, what is kangaroo? Kangaroo is a big animal. Yes, भाई ये तो animal है, ऐसे ही है ना. और look this, भाई इसका नेम है kangaroo. और kangaroo की पॉकेट में क्या है? उसका बेबी. यस, उसकी ये वाली पॉकेट होती है कैंगरू की, और कैंगरू का बेबी इस पॉकेट के अंदर होता है. यस, दिस इज कैंगरू. लुक दिस, ये देखें. लुक दिस, अ बेबी इनसाइड. लुक दिस अगेन, अ बेबी. यस, अ कैंगरू बेबी. एंड लुक दिस स्पीड ऑफ कैंगरू. इतनी फास्ट स्पीड होती है कैंगरू की. एंड कैंगरू क्या है? Wow, what a speed of kangaroo. Yes, so kangaroo is an animal. Yes, and the next friend of K is K for key. Look this, key. Bhai, key क्या होती है? What is key? To open and close the lock. Yes. लॉक को ओपन एंड क्लोज करने के लिए की यूज करते हैं. Yes. ये देखें, ये की है, और की क्या कर रही है? लॉक को ओपन एंड क्लोज करने के लिए यूज होती. लुक अगेन, लाइक दिस.
Key is used to open and close the lock. Yes, whether it is a lock of door or lock of gate. So to open and close the lock, key is used. Key lock को open and close करने के लिए use होती है. Okay, and the next friend of क is king. Yes, look this. King is wearing a beautiful crown. A beautiful crown. भाई किंग कौन होता है, कौन बताएगा? घर में तो आपके बाबा किंग होंगे ना, ऐसा है कि नहीं? Your father is, look this, yes, your father is king of house. यस भाई, घर के किंग तो फादर होते हैं, ठीक है, जिनकी सारी बातें हमें माननी पड़ती हैं और वो आपको ऑर्डर करते हैं और जो बात वो कहेंगे वो अच्छी भी होगी और उनकी बात को मानना भी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल आपके अच्छे के लिए बात करते हैं. किसी चीज़ से मना करेंगे तो वो क्या हैं, वो किंग ऑफ द हाउस हैं, तो उनके पास पावर है कि वो आपको मना कर सकते. So the king of the house is your father. And of the sound ka is ketchup. Yes, you know ना भैया, आप सब तो केचप, आप सबका तो भी केचप फेवरेट होता है. तो you know केचप किससे बनता है? With tomatoes. Yes, look this, with tomatoes. टोमेटो से केचप बनता है, रेड. एंड और केचप का टेस्ट क्या होता है? टोमेटो केचप इज sweet in taste. Yummy. K for ketchup. और ये k का friend है. Friend of k is, yes, k for kettle. Yes, look this kettle. Beautiful ना? So what is basically kettle? क्या होती है? Kettle is used to boil water or to make a tea. Yes, ये तो चाय बनाने में या तो वाटर को look this boil करने में kettle use होती है. And look this kettle. ये सब किसके फ्रेंड्स है? अभी आपने पढ़ा है ना क के. Yes, again revise once. K for kangaroo. Kangaroo is an animal having a baby in its pocket. Yes. And then key is used to open up the lock and close the and open and close the lock. Yes. And then king कौन होते हैं? Your father, आपके बाबा. You king of the house is your father. And this is ketchup. Yummy in taste and sweet in taste. सबका तो favorite है ketchup. And ketchup is of red color and is made of tomatoes. Yes, these all are the friends of the sound k. Yes, k. Let's look at the formation of the sound k. First of all, start from the very top. Go down, make a big standing line, trace on dots, make a big standing line like this, and then make a slanting line. Slanting line, टेढ़ी line को कहते हैं. Make a slanting line like this and make, stop here, अपनी pencil को आपने यहाँ पे उठा लेना है, and then make another slanting line like this. Yes, प्लीज स्टूडेंट्स डोंट डू लाइक दिस. मेक अ स्टैंडिंग लाइन, फिर इधर से ऊपर आपने जाना है ऐसे एंड देन ऐसे. नो, ये रॉन्ग वे है, ठीक है. हाउ यू विल मेक? अगेन लुक दिस. स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टॉप, मेक अ बिग स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, ऑन ट्रेस ऑन डॉट्स लाइक दिस. यहाँ पे आपने पेंसिल को उठा लेना है. पिक अप योर पेंसिल हेयर एंड देन अगेन मेक अ स्लांटिंग लाइन. यहाँ से आपने जाना है, ठीक है. Make a slanting line like this and then आपने यहाँ पे दोबारा पेंसिल को उठा लेना है and then make another slanting line. एक और हम slanting line बनाएंगे like this. Yes, this is the sound k, not ka. This is the sound k. Students, note down your homework. Teacher is giving you homework. Do work pack page number 24 and 25 and learn the sound curve with vocabulary from your reader. Yes, this is your work pack page number 24. Color in kangaroo. ठीक है, बाहर नहीं निकालना. And trace nicely and neatly and do color in king and key. Okay. And please learn the formation as well. Make a big standing line and then make a slanting line and then make another slanting line. ठीक है.
like this. And please, students, learn your reader. This is the reader page क and the friends of क. आपने बहुत अच्छे से रीडर लर्न करना है एंड प्लीज़ ट्राई किया करें कि रीडर को एस साउंड से रिवाइज करें. ठीक है, पहले उसकी रिवीजन करें एंड देन न्यू साउंड क लर्न करें. ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.